हेलो बच्चों, welcome to the YouTube channel of SURAJ School. In the last video we have discussed about the friction. We discussed about types of friction, angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमने थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करा था. Angle of friction, it is the angle between force of friction and resultant of force of friction and normal reaction. It is the angle between resultant of force of friction and normal reaction and the normal reaction. Means this is the angle of friction. If a body moves on the surface of other body, then if this is the applied force, then this is the force of friction opposite to the applied force. नीचे की तरफ vertically downwards weight of the body mg, ऊपर की तरफ that is normal to the surface, normal reaction, and this is applied force. Then angle of friction is, this is the applied force. Angle of friction is, it is the angle between, that is the force of friction at the point of contact. This is the force of friction. It is the angle between resultant of force of friction and normal reaction. This is the resultant of normal reaction and force of friction by parallelogram law of addition. Then angle of friction, it is the angle between normal reaction and resultant of force and normal reaction. This is the angle of friction represented by theta. And we have calculated tan theta, that is equal to mu, and mu is equal to force of friction divided by normal reaction. This is the relation for force of friction, angle of friction. In this video we will discuss about angle of repose. What is angle of repose? Angle of repose is the angle of inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन होरिजेंटल के साथ कोई प्लेन कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस बाय थीटा, अल्फा. एंगल ऑफ रिपोज इज रिप्रेजेंटेड वी हियर बाय अल्फा. दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी on the inclined plane is at the stage of motion, but the actual motion is not started. इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई सरफेस बॉडी करने की पोजीशन पे है, एक्चुअली मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडी नीचे की तरफ मूव नहीं कर रही. लेकिन अगर आपने इससे थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज कर दिया, हमने इफ एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीजेस बाय एंगल ऑफ रिपोज, देन द बॉडी विल मूव डाउनवर्ड्स, but the actual motion is not started. This is the angle of inclined plane at which the body is at the stage of motion, but the actual motion is not started. Means ये बॉडी मोशन करना चाहेगी नीचे की तरफ, लेकिन अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है. मींस ये नीचे की तरफ मोशन करना चाहेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन. mg vertically downwards, normal reactions normal to the surface, that is the surface, normal to the surface. Resolving mg into two rectangular components, mg को दो rectangular components में तोड़ दिया, that is mg, this is alpha. If this angle is alpha, this is alpha. Then mg resolving mg into two rectangular components, mg cos alpha, alpha के साथ बड़े axis के साथ, and this is the mg sin alpha. Then if the body is in equilibrium means actual motion is not started, and if actual motion is not started, the body is in equilibrium. Equilibrium means net force on the body is zero. Net force on the body is zero means force of friction must be equal to mg sin alpha. And normal reaction, that is normal reaction, उसके opposite वाला force, that is mg cos alpha. Dividing first and second we get f by r, that is force of friction divided by normal reaction, that is equal to mg से mg cancel out, sin alpha upon cos alpha, tan alpha. And f by r, force of friction divided by normal reaction, that is equal to mu, that is the from law of limiting friction, f directly proportional to force of friction directly proportional to r, and f is equal to mu r. Mu is the coefficient of friction, f by r is the coefficient of friction. Means tan alpha is also equal to mu, and that is always equal to tan theta. Theta is the angle of friction, that is also equal to mu.
Hence we can say that alpha is equal to theta, means angle of repose कब तक? When actual motion is not started. Alpha is equal to theta means angle of repose must be equal to angle of friction. क्वेश्चन आएगा आपके पास, prove that the angle of repose is always equal to angle of friction. This is the proof of angle of friction is always equal to angle of repose. Actual motion is not started, that is the angle of repose. अगर मूव करवानी है किसी भी बॉडी को, then the angle of repose must be greater than angle of inclined plane must be greater than angle of repose. Now we calculate acceleration of body on inclined plane, on rough inclined plane, on rough inclined plane. Acceleration of the body on the rough inclined plane. Rough inclined plane means there is a friction between the surfaces. Consider a body of mass m placed on the inclined plane which makes an angle theta. अब एक्सेलरेशन है मींस मूव कर रही है, आप दोनों तरफ मूव करवा सकते हो, आप नीचे की तरफ भी मूव करवा सकते हो, ऊपर की तरफ भी मूव करवा सकते हो, दोनों एक्सेलरेशन निकालेंगे हम निकाल रहे हैं बॉडी का मोशन जब डाउनवर्ड्स, फिर अपवर्ड्स का निकाल रहे हैं। बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स मोशन है मींस एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ये थीटा अल्फा से ज्यादा है, बॉडी नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। एम मास की बॉडी है, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, मान लिया दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नेट फोर्स ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स जिसकी वजह से नीचे की तरफ आ रही है दैट इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ this body moves to, downwards with acceleration a, then find the expression of acceleration of the body when moves downwards on the rough inclined plane. Then the various force acting on the body must be mg vertically downwards, number 1 mg vertically downwards, normal reaction that is surface के normally r represented by r, बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स है, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द मोशन मींस अपवर्ड। देन रिजॉल्विंग mg into two rectangular components we find this is the, if this angle is theta then this is angle also theta, then this component is mg cos theta and this component is mg sin theta। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, mg cos theta एंड mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दैट इज mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। देन द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, देन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इफ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स then net force that is equal to ma must be equal to downward motion। फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने कई बार बताया है, फ्री बॉडी डायग्राम से आप f is equal to ma फोर्स ऑफ according to from न्यूटन सेकंड लॉ f is equal to ma that is the net force जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ मोशन करने लग रही है। then mg sin theta is greater than a force of friction, कहीं ना कहीं mg sin theta बड़ा है तभी तो नीचे की तरफ मोशन कर। आप इक्वेशन कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम की, वो फोर्स देख लो जिसकी वजह से मोशन कर रही है दैट इज एम, और दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का मोशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स ज्यादा नीचे की तरफ ले आया, सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, ज्यादा वाले में से कम वाला मींस mg sin theta minus f। दिस इज द इक्वेशन and f is equal to force of friction must be equal to f is equal to mu r from law of limiting friction and r is equal to normal reaction from the figure, normal reaction r must be equal to, क्योंकि बैलेंस कर रखा है सरफेस ने, नीचे थोड़ी आ रही है सरफेस, ऊपर थोड़ी जा रही है बॉडी, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस ने ये इक्विलिब्रियम में है, ये बैलेंस कर रखा है। mg
cos theta. Then putting the value of r, we get F is equal to mu mg cos theta. Then again putting the value in equation 1, we get ma is equal to mg sin theta minus mu mg cos theta. Then cancel out m on both sides, we get a acceleration of the body on the rough inclined plane when moving downwards. Acceleration is equal to g taken as common, we get sin theta minus mu cos theta. This is the acceleration of the body when moving downwards. Now we find acceleration of the body when moving upwards. Then what will be the difference between upward and downward motion? The force of friction must be downwards. If applied force is upward, if the body is moving upward, then what is the acceleration of the body? Then what is the difference between upward and downward motion? If applied force is upward, then force of friction is downwards, and to move a body means acceleration से ऊपर की तरफ जा रही है body, and if net force is equal to net force on the body, that is equal to ma, that must be equal to ma must be equal to what will be the equation? Ma equal to, that applied force must be at least equal to what will be किसके इक्वल होगा? ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ऐड कर दो, mg sin theta plus f. This is the difference between, here is plus, here is minus. Then again putting the value of f, we get ma is equal to mg sin theta plus f is equal to mu r. Again r is equal to mg cos theta. From the diagram we get m से m cancel out दोनों तरफ. Then we get a is equal to g sin theta, g taken as common, we get sin theta plus mu cos theta. This is the acceleration upward का, ये downward का. If a body is moving upward and if a body is moving downward, then this is the expression for acceleration of the body on the rough inclined plane. रफ का मीन्स वहां पे सरफेस के दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ, और फ्रिक्शन की खासियत है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काम करता है. दिस इज द फोर्स ऑफ acceleration of the body in moving downward and upward on the inclined plane. Thanks. Have a nice day.